LG रेफ्रिजरेटर प्रॉब्लम, नो कूलिंग। फ्रीज़र में कूलिंग हो रहा है, रेफ्रिजरेटर में नहीं हो रही कूलिंग। अभी हमने बंद किया है फ्रिज को, यहाँ पर कूलिंग नहीं हो रहा है फ्रीज़र कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में। चेक करना है अभी क्यों। इतना सामान भर के रखा है फ्रिज में, कस्टमर का कंप्लीट कूलिंग नहीं होता। फ्रीजर टेम्परेचर 14.4, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 29.2। कभी कभी ज़्यादा सामान भरने की वजह से भी कूलिंग नहीं होता है, तो हमने रेफ्रिजरेटर खाली किया है पूरा चेक करने के लिए। फ्रिज में कस्टमर को कंप्लेंट था, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग नहीं हो रहा है, फ्रीजर में कूलिंग हो रहा है, तो कि हमने सामान खाली किया है। कूलिंग हो रहा है 24.8, रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर, फ्रीजर टेम्परेचर 8.4। 3 घंटे में कूलिंग हो जाएगा। फ्रिज ओके है, सामान की वजह से कूलिंग नहीं हो रहा था। जितना गैप दोगे उतना बेहतर है। कस्टमर कंप्लेन कूलिंग नहीं हो रही मगर सामान ज़्यादा है, ऐसे एयर पास नहीं होता। तो गैप देना ज़रूरी है सामान में।